Hello, everybody. I'm Aprajita Verma, and I welcome you all on behalf of ALEC Institute. So, this video we have specifically prepared for those candidates who are preparing for MP Civil Just preliminary examination and who are looking and searching for the most important current affairs. So, without wasting time, let's quickly start with it. Okay, so Amitabh Bachchan has been recently appointed as an ambassador of IDFC Bank. Vishwanath Anand, who is the famous chess player, has been appointed as ambassador of World Wildlife Fund. Joe Biden, who has been appointed as 46th US President, Shivraj Singh Chauhan has been appointed for the fourth time as the CM of Madhya Pradesh. Ram Charan Sharma has been appointed as CEO of Ayushman Bharat. Kamala Harris has been appointed as 49th Vice President of US and her maternal roots belongs to Tamil Nadu. Chief Minister of Bihar Nitish Kumar and Deputy Chief Minister of Bihar Renu Devi. Now, Justice Hema Kohli has been appointed as first ever female Chief Justice of Telangana High Court, and Utpal Kumar Singh has been appointed as Secretary General of Lok Sabha. Justice Pankaj Mittal has been appointed as Chief Justice of Jammu Kashmir and Ladakh High Court, and Sanjay Kothari has been appointed as Chief Vigilance Commissioner. Chairman of NASSCOM UB Praveen Roy and first Chairman of National Medical Commission, it is Suresh Chandra Sharma. Yashvendra Kumar Sinha has been appointed as Chief Information Commissioner and Harish Salve has been appointed as Queen's Counsel for the Courts of England and Wales. Harivansh Narayan Singh has been re-elected as the Deputy Chairman of Rajya Sabha and Paresh Rawal has been appointed as the Chairman of National School of Drama. Whereas Sunil Arora has been appointed as the Chief Election Commissioner of India and Rajiv Kumar and Sushil Chandra are the Election Commissioner of India. Ashok Lavasa has been appointed as the Vice President of Asian Development Bank. Asian Development Bank ये Manila में है, Philippines. Roshni Nadar Malhotra has been appointed as HCL Technical Chairman. She is the daughter of Ship Nadar. Chairman of NABARD Govinda Rajulu Chintal and Chief Justice of Bombay High Court Justice Dipankar Datta. Justice Mohammad Rafiq has been appointed as the Chief Justice of Madhya Pradesh High Court and Krishnamurthy Subramaniam as the Chief Economic Advisor. Urijit Patel as the Chairman of National Institute of Public Finance Policy and नरेंद्र मोदी को नोबेल प्राइज 2020 फॉर मेडिकल एजुकेशन का अवार्ड मिला है. 2020 दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड ऋतिक रोशन को मिला है. And Gyandro Negomam has been appointed as the President of Hockey India 2020. Saurav Ganguly has been appointed as the BCCI President. Now let's quickly see awards and honor. स्वच्छ भारत अवार्ड 2020 बेस्ट स्टेट अवार्ड मिला है गुजरात को, बेस्ट सिटी इंदौर को मिला है और बेस्ट ब्लॉक कचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश को मिला है. Whereas फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड ये मिला था फर्स्ट टाइम विश्वनाथ आनंद को. Whereas राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इस साल रोहित शर्मा को मिला है क्रिकेट में, विनेश फोगाट को फॉर रेसलिंग, मनिका बत्रा फॉर टेबल टेनिस एंड रानी रामपाल फॉर हॉकी. अर्जुन अवार्ड मिला है दीप्ति शर्मा को एंड नारी शक्ति पुरस्कार अवार्ड मिला है अवनी चतुर्वेदी को एंड शी इज फ्रॉम मध्य प्रदेश. अंजुम चोपड़ा बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर वुमेन मिला है अंजुम चोपड़ा को एंड बीसीसीआई स्पेशल अवार्ड मिला है दिलीप जोशी को. हाईएस्ट रन गेटर इन टेस्ट क्रिकेट चिताश्वर पुजारा एंड हाईएस्ट विकेट्स इन टेस्ट क्रिकेट ये जसप्रीत बुमराह को मिला है. पॉली उमरेगर अवार्ड बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर ये भी मिला है जसप्रीत बुमराह को एंड नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 मिला है रवि गायकवाड़ को. Whereas सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड 2017 और 2018 दोनों में ही विराट कोहली को अवार्ड मिला है फॉर मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड. Whereas 2019 में सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी अवार्ड मिला है बेन स्टोक्स को. आईसीसी मेन ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द डिकेड मिला है विराट कोहली को एंड आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड मिला है स्टीव स्मिथ को. Whereas आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड मिला है एमएस धोनी को. तानसेन सपान अवार्ड फॉर म्यूजिक 2020 ये मिला है पंडित सतीश व्यास को एंड इंटरनेशनल चाइल्ड पीस प्राइज 2020 अवार्ड मिला है सदात रहमान को.
यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड मिला है सोनू सूद एक्टर को। एंड पद्म विभूषण अवार्ड 2021 मिला है एसपी बालासुब्रमण्यम को। वेरस पद्म भूषण मिला है सुमित्रा महाजन को फॉर पब्लिक अफेयर्स, तरुण गोगाई पोस्ट थॉमस पब्लिक अफेयर्स, नृपेंद्र मिश्रा फॉर सिविल सर्विसेज एंड राम विलास पासवान फॉर पब्लिक अफेयर्स। वेरस क्रिस्टल अवार्ड ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मिला है दीपिका पादुकोण को। एंड नोबेल पीस प्राइज 2019 अवार्ड मिला है अभी अहमद अली को एंड ही इज फ्रॉम इथोपिया। Whereas Nobel Prize in Economic Sciences 2020 मिला है पॉल आर मिलग्रॉम को एंड रॉबर्ट बी विल्सन को। Whereas Naveen Patnaik has been conferred with Hero to Animal Award given by PETA, that is People for Ethical Treatment of Animals. And Ministry of Panchayat Raj has won the Scott Challenger Award for Transparency in Governance. Whereas Ruskin Bond को मिला है, Ruskin Bond is the winner of Tata Literature Lifetime Achievement Award मिला है, and Kerala is the first state of India to fix the floor price for vegetables. वहीदा रहमान को किशोर कुमार सम्मान मिला है conferred by मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। एंड स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर है बजरंग पूनिया फॉर रेसलिंग। यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला है विद्युत मोहन को। रविन्द्रनाथ टैगोर लिटरेरी अवार्ड मिला है राजकमल झा को। किड ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है गीतांजलि रॉय को। एंड सौराष्ट्र टीम हैज वन द रणजी ट्रॉफी टाइटल फॉर द ईयर 2019-2020। जय शाह हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल। वेरस लद्दाख में इनॉग्रल हुआ था खेलो इंडिया विंटर स्पोर्ट का। And Sanjay Kapoor has been elected as the new president of All India Chess Federation. Punjab University Chandigarh has bagged the Maulana Abdul Kalam Azad Trophy 2020, and Novak Djokovic has clinched the men's single title in Australia Open Tournament 2020. Whereas Sachin Tendulkar is the first Indian sportsman to win a Laureus World Sport Award at 20th annual edition held at Berlin, Germany. और पीवी सिंधु हैज वन द बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2019. Whereas MS Dhoni is first ever to earn more than 150 crore in IPL, and Dominic Thiem has won the US Open Men's title 2020. Naomi Osaka has won US Open Women's Single title 2020. अब हम क्विकली एक बार होस्ट देख लेते हैं, कौन सी कंट्री क्या होस्ट करेगी। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमने वो यहाँ पे निकाले हुए हैं। सो एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन वुमेन्स एशिया कप 2022 इंडिया में होस्ट होगा। विंटर ओलंपिक गेम्स 2022 चाइना में होस्ट होगा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतार विल बी होस्टेड, एंड 19th एशियन गेम्स 2022 अगेन इट विल बी होस्ट बाय चाइना। एंड पंजाब यूनिवर्सिटी इज द विनर ऑफ द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020, और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी इसका होस्ट किया था भुवनेश्वर उड़ीसा ने। अब हम बुक्स देखते हैं, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स। इनविजिबल अ ट्रिब्यूट टू मनोहर पारिकर, दिस इज अ बुक रिटन बाय तरुण विजय। कर्मा योद्धा ग्रंथ ऑन लाइफ ऑफ नरेंद्र मोदी, दिस इज नॉट बीइंग रिटन, दिस इज जस्ट हैव पब्लिश्ड। लेडी यू आर द बॉस, रिटन बाय अपूर्वा पुरोहित। द रिपब्लिकन एथिक एंड लोकतंत्र के स्वर, दिस बुक हैज बीन रिटन बाय रामनाथ कोविंद। एंड अयोध्या बुक has been written by Madhav Bhandari. COVID-19 सभ्यता का संकट और समाधान, this book has been written by Kailash Satyarthi. And Rabindranath Tagore Literary Prize 2020 award मिला है राजकमल झा को for the novel The City and the Sea के लिए। 40 years with Abdul Kalam Untold Story, this book has been written by Dr. A. Sivathamal Pillai. अब हम quickly important days देख लेते हैं। 9 January has been celebrated as Pravasi Bharatiya Divas, 15 January as Indian Army Day, 25th January as National Voters Day, 15th March as World Consumers Day, and 22nd March as World Water Day. 22nd March as World Water Day, and 22nd April as World Earth Day. 28th April as World Intellectual Property Day, 8th May as World Red Cross Day, 31st May World No Tobacco Day, 14th June World Blood Donor Day, 23rd June International Olympic Day, 30th June International Asteroid Day, 1st December UNICEF Day, 13th December National Energy Conservation Day, 14th December as Vijay Diwas Day, and 23rd December as National Farmers Day.
Whereas quarantine is the word which has been selected as the word of the year 2020 by Cambridge Dictionary. India has been elected as the president of International Solar Alliance. इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है इंडिया में. नरेंद्र मोदी एंड फ्रांकिस होलेंडर इज द फाउंडर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस और इसके प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अजय माथुर. Whereas cyclone Amphan has a landfall between Diga in West Bengal and Hatia Island in Bangladesh recently, and Thailand country has proposed the name Amphan for the cyclone. US country has the highest number of unicorn in the world according to the recent Huron Global Unicorn List 2020. Whereas Shrishti Goswami was in the news because she was elected as she was one day Chief Minister of Uttarakhand state. Ramesh Pokhriyal Nishank has been honored with Sahitya Gaurav Suman by Hindi Writers Guild Canada. Shivangi Singh as first woman fighter pilot to fly the Rafale aircraft. And Mukesh Ambani has topped the Huron India Rich List 2020. अब rankings देखते हैं हम लोग quickly. Global Terrorism Index में Afghanistan has ranked first and India has ranked 8th. Lahore has ranked as the world's most polluted city in the latest US Air Quality Index 2021 and Delhi has ranked second. Human Development Index में इंडिया की रैंक 131 है. ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक हैज 94. ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में फर्स्ट इज स्वीडन. वेयरएज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स इंडिया की रैंक है 74th. Whereas global competitive index में इंडिया की रैंक है 68th. Singapore country has topped the Global Economic Freedom Index 2020. Climate Change Performance Index में Sweden has ranked 4th and India has ranked 10th. Global Innovation Index में India has ranked 48th. Then Sustainable Development Goals Index में India has ranked 117th. And Climate Performance and CPI 2020 India has ranked 86th. Corruption Perception Index में India has ranked 86th. Then for UK has topped Global Real Estate Transparency Index 2020, whereas India की rank 34th है. Norway has topped Global Press Freedom Index 2020 and India has ranked 142nd. USA topped 2020 Global Innovation Policy Center's Intellectual Property Index and India has ranked 48th. Whereas Singapore has ranked topped in the World Competitive Index 2020 prepared by International Institute of Management and Development, whereas India has ranked 68th. Karnataka has topped the India Innovation Index 2021 released by Niti Aayog recently in Major States category. और जो अभी हमने रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करा है 2021 में दैट वाज 72nd रिपब्लिक डे. फॉर द फर्स्ट टाइम लद्दाख यूनियन टेरिटरी की टेबुलो डिस्प्ले हुई थी. Since the state of Jammu and Kashmir was bifurcated into 2 union territories and tableau of Uttar Pradesh has won the best award. It was designed on the theme Ayodhya Cultural Heritage of Uttar Pradesh. So ये है हमारे most important current affairs for MP Civil Service Prelims Examination Part 1. Part 2 में हम और ऐसे questions लेकर आएंगे. Thank you very much guys for watching this video. If you want the PDF of this video, it is available on Telegram channel and the link is been below. And if you like this video, please like, share and subscribe to our channel Alec Institute. Thank you guys. Till then, bye bye guys. Take care.